इंपॉर्टेंट है समझना कि what happens here is that let's go and talk about brain ना, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात करते हैं. Remember if when I was teaching you endocrine glands, तो मैंने आपको जो सबसे पहला ग्लैंड बताया था हम वहां से बात शुरू करते हैं. आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम जो मैंने आपको ऑलरेडी एंडोक्राइन वाले में बताई थी. ठीक है, एंड लेट मी लेबल दिस फॉर यू गाइज. बेटा दिस इज, यस, आई होप यू कैन रिकॉल इट. दिस इज hypothalamus and this is the anterior lobe of pituitary gland. सही जी. तो why I have drawn this here? Because this has to play an important role during this whole process of menstrual cycle. So the process begins from here, where what happens is that hypothalamus के बारे में, if you remember in my lecture of endocrine glands, I've told you that pituitary controls a lot of glands, but hypothalamus is the master of pituitary, which means that hypothalamus controls pituitary. Hypothalamus controls pituitary gland. So what happens is that during, अब हम याद रखिएगा हम प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, ग्रोइंग फेज, ग्रोथ फेज पढ़ रहे हैं. तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, शुरू कैसे होता है ये कहानी कि द हाइपोथैलेमस starts making a hormone or releasing a hormone that goes and acts on anterior lobe of the pituitary. मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आपके लिए विजिबल हो. And this hormone is coming into the anterior lobe. ठीक है, this hormone is coming into the anterior lobe, and which this hormone is? बेटा this hormone is GnRH. It is gonadotrophin releasing hormone. It is gonadotrophin releasing hormone. It is gonadotrophin releasing hormone. ठीक है, what is happening, that hypothalamus is making a hormone, and that hormone is going through the pituitary stalk into anterior lobe of pituitary gland. This is pituitary stalk, and this hormone is going through this pituitary stalk into the anterior lobe of the pituitary gland. And when it goes into anterior lobe of pituitary gland, it orders pituitary to release gonadotrophins. This is gonadotrophin releasing hormone, ठीक है ना. And when it acts or when it goes to the pituitary, anterior lobe of the pituitary gland, it orders anterior lobe of the pituitary gland to release hormones which are gonadotrophins. ठीक है, gonadotrophins. And if you remember what gonadotrophins are, तो आपको याद आएगा that I have told you that under the action of pituitary, यहाँ से दो hormones निकलेंगे. Number 1 and let's say number 2. Number 1 and number 2. ठीक है, and what are those number 1 and number 2? Number 1 is FSH and number 2 is LH. Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Together they are called gonadotrophins. Together they are called gonadotrophins. So what is happening, I'll repeat it again and again. What is happening here, that when the menstrual phase ends, the
hypothalamus, which is the neurocrine as well as the endocrine gland, starts releasing a hormone that is called GnRH, gonadotrophin releasing hormone. This hormone through pituitary stalk reaches the anterior lobe of the pituitary gland, and it stimulates pituitary gland to release gonadotrophins, which means two hormones, FSH and LH. So FSH and LH are now into bloodstream. ठीक है, FSH and LH are now into bloodstream. सही है जी? So let's say this is bloodstream. And let's say कि यहां पर ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, एंड दिस लेट्स से दिस होल स्ट्रक्चर is ovary. This whole structure is, let's say this is ovary. I should draw it. Let's say this structure is, I should draw here, no? This structure, let's say, is ovary. So what is going to happen that these two hormones through bloodstream reaches to ovary, and they also, so this is ovary, I should label it first. Okay, I'm just trying to make things clear. Okay, this is ovary, and you should know from your O levels that ovary consists of lot of structures like this, and these structures are called oocytes. These structures are called oocytes. So here we have, और अभी इसको आसान कर लेते हैं, immature follicles. These structures, ovary normally has these immature follicles. ठीक है ना? तो ovary के पास normally ये immature follicles होते हैं. So what happens is that each of these immature follicles, I should label it ना, each of this follicle, चलो मैं label कर देता हूँ पहले कि what they are immature follicles. So what happens is that each of this follicle, I am drawing one follicle a bit larger just to tell you that what is going to happen. Each follicle contains a receptor for LH, and it also contains receptor for FSH. Each one of them has this. ठीक है? Each follicle has got these receptors, one for FSH and other for LH. So what happens is that through bloodstream, FSH and LH enters into the ovary, which is the female gonad, and they attaches to their receptors. ठीक है? यहाँ पर आकर LH is coming
and finally get attached here. In the same way, FSH is coming and finally get attached here. ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है, नज़र भी आ रहा है. ठीक है, तो इट्स कमिंग एंड इट फाइनली गेट अटैच्ड here. ठीक है बेटा, when it attached, when these both the receptors are attached on all these follicles, what happens is that these follicles under the action of these hormones, starts growing. The follicles under the action of these immature follicles under the action of these hormones starts growing, and when they starts growing, actually what happens is that a selection takes place. अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना आप भूल गया कि यू मस्ट रिमेंबर दैट जो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, आई विल शो यू द डायग्राम एज वेल. उसमें ओवरी होती है और उसमें यूट्रस होता है. दो मेन स्ट्रक्चर जो आपको है. तो ओवरी का पूरा एक पेयर होता है, यानी वी हैव 2 ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बेसिकली इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली अ सिंगल ओवरी रिस्पॉन्ड, यानी अगर एक राइट ओवरी है और एक लेफ्ट ओवरी है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई एक ओवरी नॉर्मली कोई एक ओवरी पार्टिसिपेट कर रही होती है. लेट्स सपोज अगर राइट ओवरी ने एक साइकिल में परफॉर्म किया तो नेक्स्ट में लेफ्ट करेगी. अच्छा, इट मे हैपन्स कि 2 बार राइट कर ले या 3 बार राइट कर ले फिर लेफ्ट कर ले, तो कोई ऐसा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल है. बट यूजुअली एक वक्त में एक ओवरी एक्टिव होती है, यानी जो ब्लड स्ट्रीम का फ्लो होता है वो एक ओवरी में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं वो एक ओवरी में हमें ज़्यादा नज़र आ रही है. लेट्स सपोज इस वक्त हमने एक ओवरी को फोकस किया हुआ है. ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंस इज that when these hormones attaches to the eggs, not eggs, immature follicles, so what happens is that a selection happens. Actually what is the mechanism here कि कोई एक follicle out of these in each cycle, कोई एक follicle out of these in each cycle responds more to the hormones, each follicle has got the receptors, but what happens normally that during the cycle normally कोई एक follicle ज़्यादा responsive होता है या उसके receptors ज़्यादा response कर देते हैं to hormone, and that's quite natural. ठीक है ना, ये बिल्कुल एक नेचुरल और एक रैंडम सिलेक्शन होती है. लेट्स इमेजिन कि दिस टाइम दिस इज द फॉलिकल व्हिच हैज रिस्पॉन्डेड मोर एज कंपेयर टू ऑल दीज फॉलिकल्स. तो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी देखता है कि भाई एक फॉलिकल ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज थ्रू नर्वस कंट्रोल ऑल द अदर फॉलिकल्स आर लॉस्ट और गेट लॉस्ट. यानी जो ऑल द अदर फॉलिकल्स जिनको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई रिस्पॉन्ड अगर आप करोगे तो हम आपको फ़ायदा देंगे, तो वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाती है. यानी वंस व्हेन वन सिंगल फॉलिकल बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, तो दैट फॉलिकल इज सिलेक्टेड and now all the hormonal flow will only be on this follicle. This follicle, whereas all the remaining follicles will now blood stream, hormones will not be directed towards those other follicles, and therefore I am going to rub them now. I should rub not all of them, but I should rub just few of them. ठीक है ना. तो what happens is कि वो फिर silent हो जाते हैं. ठीक है, because they are not selected. They got a chance, but they are not selected. Let's suppose this follicle is selected. So what happens is that under the action of these two hormones, FSH and LH, under the action of these two hormones, FSH and LH, this follicle starts growing.
starts growing. Under the action of these two hormones, this follicle starts growing. So how, let me show this. This follicle starts growing. This follicle starts growing. ठीक है? How does it start growing? In this manner. ठीक है ना? This follicle starts growing, and now this is called as growing follicle or graphene follicle or selected follicle. ठीक है? It's now growing follicle or selected follicle. Okay, now these follicles consist of two types of cells. I'm showing them with separate color just to show you what is going to happen now. These follicles consist of two types of cells. Number one, theca cells. I've shown them with black. Theca cells, and number two, जिनको मैंने रेड से शो किया है, granulosa cells. So what is happening here, that under the action, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, complicated नहीं लग रहा है. यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन आना शुरू हुआ है, उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया है, वहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीज हुए हैं, वो आ रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, दे रीच टू this level ovary at one or in one cycle only. Usually one of the ovary is selected. Let's suppose this ovary has been selected, so there are a lot of immature follicles within that ovary. Now hormones has got their receptors on each immature follicle. तो अब होता क्या है कि initially they start acting on every follicle, but usually one follicle become more responsive, and once that is decided कि which follicle is responding more, then all the hormonal flow is directed towards that follicle rather than other follicles, and that follicle starts growing under the action of those two hormones FSH and LH, whereas the other follicles जो है ना वो दोबारा shutdown mode पे चले जाते हैं, they become totally non-active and they wait for the next opportunity in the next cycle. ठीक है नहीं? तो now this follicle starts growing. Now I am saying you that when these follicles starts growing, actually there are two kinds of cell in the follicles, the theca cells and the granulosa cells. What happens is that the granulosa cell starts making a hormone called endosteranodiol. अब आपको ये नाम याद नहीं रखना है, but just remember कि both these cells combine their activity, the theca cells and the granulosa cells, and both these cells by their combined activity, यानी ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारे चूंकि A levels में नहीं है इतना डिटेल तो मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ. इसको समझो कि granulosa cells कोई X चीज़ बना रहा है, और वो फिर Y, और Y एक जो theca cells है वो Y चीज़ बना रहे हैं, और X in presence of Y is converting into another hormone. X in presence of Y is converting into another hormone, and this hormone is estrogen. This hormone is estrogen.
This hormone is estrogen. So what is happening here? Estrogen starts getting synthesized. Remember again, FSH and LH now are acting only on one follicle, and that follicle is growing under the action of these two hormones. There are two types of cells within this follicle, and two of them are making separate products, which when combined together they release or they form another hormone, and that is called estrogen. Now what happens that, and as this follicle is growing, more and more estrogen is synthesized, and estrogen starts entering into the blood. Through blood, estrogen reaches two places. Number one, the function of estrogen, number one function, that it acts on the uterine wall. It acts on the uterine wall. चलो मैं यहाँ साइड में यूट्रस ड्रॉ कर देता हूँ. Let's say this is the uterus. So what estrogen does is that number one action of estrogen is on uterus. I should write it here. Uterus. So what happens is that under the action of uterus, the muscle of the uterine wall starts growing. Estrogen क्या करता है? Estrogen क्या कर रहा है? Estrogen starts causing the growth of the uterine muscle. Estrogen starts causing the growth of the uterine muscle because body जानती है कि the body is basically getting ready for fertilization. ठीक है, because you know कि जब fertilization हो जाएगी तो uterus has to play its role. So what happens is that estrogen क्या कर रहा होता है? It starts growing the uterine lining. जो uterine lining है इसको वो grow करना शुरू करा देता है. So मैं यहाँ लिख देता हूँ, increases uterine ग्रोथ. यूट्राइन जो ग्रोथ है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, एक काम तो ये हो रहा है. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है समझने का, वो बड़ा जबरदस्त है जो आपको समझना है कि ईस्ट्रोजन has got estrogen. अच्छा, FSH and LH are coming. Remember, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ. FSH and LH are coming from the pituitary gland, anterior lobe, and they are working on the follicle. Follicle is growing quite rapidly, and estrogen levels are getting higher. At the same time, uterine muscle, uterine wall is growing. Uterine muscle और uterine wall भी grow कर रही है because it is getting ready for the fertilization. ठीक है. Now what happens is that what I'm trying to tell you is that estrogen has got a negative influence on GnRH, और स्पेसिफिकली जो ईस्ट्रोजन है उसका नेगेटिव फीडबैक है किसके लिए? पिट्यूटरी के लिए, और स्पेसिफिकली एफएसएच के लिए. ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है किसके लिए? एफएसएच के लिए पर्टिकुलरली. ठीक है, ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच के लिए और एलएच के लिए भी, बट मोर फॉर एफएसएच. तो मैं इसलिए इन जनरल कह रहा हूं कि ईस्ट्रोजन हैज अ नेगेटिव फीडबैक ऑन जीएनआरएच. जरा इमेजिन करो कि जीएनआरएच अगर ये बढ़ता जा रहा है तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इट विल कॉज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ जीएनआरएच. क्या ख्याल है? जब ईस्ट्रोजन, अगर मैं कह रहा हूं हाइपोथैलेमस पे जाकर इफेक्ट कर रहा है और नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक है यहां पर, ये नेगेटिव फीडबैक से इसको इनहिबिट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो इट मींस मोर द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन राइजेस. जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा जो है वो जीएनआरएच के लेवल्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल्स क्या होते जाएंगे? कम. एंड एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल्स जितने ज्यादा डिक्रीज होते चले जाएंगे, ऑब्वियसली क्या होगा? एफएसएच और एलएच के लेवल्स भी डिक्रीज होंगे. तो अब यहां मैं जंप नहीं करना चाह रहा, तो जस्ट क्विकली लिसन. What happens is that GnRH is coming. It is ordering pituitary to release FSH and LH. When FSH and LH are released, they go to the blood. They through the bloodstream reaches to ovary, where they start working on different follicles.
and one of the follicle is selected, and once the follicle is selected, all the hormonal flow is directed towards that follicle, and that follicle under the action of FSH and LH starts growing, and that follicle becomes the growing follicle or the graphene follicle. Now these follicle consist of two types of cells, granulosa and the theca cells, and these cells together, the granulosa and the theca cells together, they make a hormone called estrogen, and that estrogen is number one function of that estrogen is going to increase the uterine growth. It will work on the uterus and it will increase the uterine growth, whereas it will also has a negative impact on the GnRH. तो अब इससे पहले कि नेगेटिव इम्पैक्ट GnRH पे जाए, यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में जाए, लिसन केयरफुली, मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि जिस वक्त द फॉलिकल इज सिलेक्टेड, देखो आपको याद हो GnRH की वजह से LH और FSH आना शुरू हो गए थे. अब कंफ्यूज नहीं होना बेटा, FSH और LH आना शुरू हो गए थे, बट रिमेंबर कि जब